Assalamualaikum and welcome to the channel. Back in the year 2017 मैं चाइना में था और मेरा स्टे था तकरीबन लिटिल ओवर अ ईयर. तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ से किसी और मुल्क में ट्रैवल किया जाए और द क्लोजेस्ट वन वाज जापान. वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड एंजॉय इट. जापान की एक हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रही है ज़हन में टू सी हाउ इट इज़. और थोड़ा बहुत स्टडी किया मैंने. तो आई वांटेड कि मैं एक ऐसी जगह टोक्यो में रहूं और ओसाका में जहाँ पे मुझे और चीज़ों का एक्सेस भी हो, यानी और जगह देखने का इजी एक्सेस भी मिले, प्लस कॉस्ट इज़ अनदर फैक्टर. मुझे ये भी इंटरेस्ट था कि जो मेरा होटल है वो एक ऐसे एरिया में हो जो इट्सेल्फ जिसमें कुछ एजुकेशन हो और ऑब्जर्वेशन हो. सो इन टोक्यो आई डिसाइडेड टू प्लान माई स्टे इन अ होटल इन कबूकी चो. कबूकी इन जापानीज इज़ मेरी स्टाइलाइज्ड जो उनका थिएटर टाइप चीज़ को उसको कहते हैं वो कबूकी. एंड चो मीन्स डिस्ट्रिक्ट, सो दे कॉल इट द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट. उसकी खासियत ये है कि बैक इन द डे ये जो इलाका था टोक्यो का, ये जापानीज़ माफिया जिसको याकुज़ा कहते हैं उसके कंट्रोल में था. ऑल्दो जब मैं ट्रैवल कर रहा था आई वाज टोल्ड एंड इन्फॉर्म्ड दैट इट्स एब्सोल्युटली सेफ. इनफैक्ट जब मैंने वहाँ जाके रहा तो इट वाज सो क्लीन, सो नॉर्मलाइज्ड. और यानी कि जो वहाँ की नॉर्मल जो डेमोग्राफी है वो इतनी नॉर्मल है. वहाँ पे आपको स्कूल बैग पहने हुए बच्चे भी नज़र आते हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, कोई यानी कि आप थ्रेटन फील नहीं करते किसी किस्म का. इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड बट आई स्टिल वांटेड टू स्टे देयर. स्पेशली इसमें एक एरिया आप देखेंगे वीडियो क्लिप में जो बहुत तंग सी गलियां हैं उसमें. जब से याकुज़ा कंट्रोल ख़त्म हुआ तो इट बिकेम अ वेरी फैशनेबल काइंड ऑफ अ प्लेस फॉर द टीवी स्टार्स एंड मूवी स्टार्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एंड राइटर्स एंड पोइट्स एंड कि वो उधर जाते हैं और वहाँ बैठते हैं, गपशप करते हैं बार्स में. तो उसका भी एक ग्लिम्स आपको मिलेगा. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned. Can't handle the space, I need you here by my side. You make me sweat in the cold. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned.